नाउ एज अभी इसके पहले वाले वीडियो में वी हैव जस्ट रजिस्टर्ड, we have just seen the new inquiry mail, how to paste that, how to make folder. But we want we want a proposal number also to be allocated to that particular inquiry. So for that, what we will do, we will just go to drive. In that drive, we have a share, means a proposal list is made which is shared with a marketing team. So in that we have a proposal number list. We will just open that particular list. In that we will go to alloy piping, as we have to register the inquiry for coolers. So for coolers we will go टू अलॉय पाइपिंग्स. अभी ये हमारी प्रपोजल लिस्ट है, इसमें वी हैव डिफरेंट बाइफर्केशंस ऑफ GTE, दैट इज कैंडल fiber bed candle filters. We have demister pads, and next is of budgetary proposal. Whatever budgetary inquiry आती है तो we will give a proposal number according to this. This is service proposal. Whatever service with along with piping we will give to customer, that we will inquiry will register over here in this list. So now we have received this inquiry of Aarti coolers, so this will come under the category of alloy piping, that is GEC. How we'll give a inquiry number to this new inquiry is, means proposal number. What we will do, we'll just search earlier in this year whether we have received any inquiry from Aarti or not. We'll see accordingly, then we will give a proposal number to that particular inquiry. Now see, if you can see, we have already received this inquiry on May. We have given the number of AP 222315, that is Aarti DT cooler. We have received that inquiry on June, means different inquiry which was of retubing of cooler. Then next on September also, on June also we have received this inquiry. Now we received this inquiry again in December. So what we will do, we will select all down whatever things are there. After this we will select, we have to select it properly. ये everything we will select till down. Once we have selected till here, we will just copy paste, when again move up. Where was our Aarti? Yeah, we will leave one row and again we'll paste this full inquiry. This row we will just erase it, and we will allot a new number to this particular inquiry which we received on December. We received, so हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे नंबर देते हैं. जैसे कि अभी हमें एक इंक्वायरी मिली तो हमने 15 एक पर्टिकुलर ईयर में अलॉट कर दिया. फिर सेम इंक्वायरी हमें वही ईयर में मिलती है दूसरे मंथ में, तो A होता है. फिर नेक्स्ट मंथ में तो B होगा, नेक्स्ट मंथ में D होगा. इफ़ सेम इंक्वायरी सेम मंथ में 2 मिलेगी तो उससे भी डिफरेंट हम अल्फ़ाबेट से ट्रीट करेंगे. जैसे कि अब ये होगा अपना D. एंड आरती का we received कूलर के लिए, and that was which cooler, will just check that was OT कूलर and DT and FAT कूलर. तो यहाँ पे जाकर हम लिखेंगे OT कूलर, OT मीन्स ओलियम कूलर, कॉमा DT कॉमा FAT कूलर. सो दिस वर 3 कूलर्स. तो इस प्रकार हमें यहाँ पे इंक्वायरी नंबर मिलती है AP 2223-51D. सो अब हम क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी मेड अ फोल्डर. सो हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ हम न्यू इंक्वायरी पेस्ट करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम सर्वर पर जाएंगे, एंड जैसे कि ये हमारा सर्वर है, इसमें कंपनी के अंदर GC के अंदर वी वेंट इन. अब हम बाहर जाएंगे और हम ये पर्टिकुलर इंक्वायरी को रीनेम करेंगे. हम इंक्वायरी के
नंबर के हिसाब से यहाँ चीज़ें पेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। सो ये हो जाएगा AP 22, 23, 15D। यहाँ पे हमारा कौन सा कूलर था? एक तो ओलियम कूलर था, ओलियम कूलर। नेक्स्ट इट वाज DT कूलर, तो हम सिर्फ DT लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट इट वाज FAT कूलर, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज. So this we made the folder. In this way we have to create a folder in when we receive a new inquiry. Thank you.